study only in alkanes, this two. Okay, copper you have studied also in alkynes में dimerization, polymerization में, remember we have studied that. Now और reactions में क्या होता है, basic से चीजें हो जाती है, जैसे कि if I am having alkane, if I am just putting it with KMnO4 OH minus ले लो या KMnO4 acidified ले लो, okay, whatever you take, because it is having no acidic hydrogen, it will always make alcohol. Which alcohol? If alkane है तो normally primary alcohol ही बनाता है. Okay, keep in mind. It will make, even with acidified potassium dichromate solution, it is going to obtain alcohol. कुछ और नहीं बनेगा. Got it? What one are we using? OH or H plus? OH both, like दोनों के साथ you can have, not together in separate reaction. This is called acidified potassium permanganate, alkaline potassium permanganate. So alkaline potassium permanganate is low in oxidizing property compared to acidified, but both are giving the same product. क्यों? Because there is no acidic hydrogen here. Oxidation मतलब बेटा acidic hydrogen. Keep in mind whenever oxidation coming, if acidic hydrogen is there, याद है acidic hydrogen ग्रिग्नार्ड अंकल ने कितने अच्छे से उस दिन बताया था हमें. Zervitnov's reaction we have studied in that. We have studied acidic hydrogen is so important by which you can make so many good products, but only if you identify this acidic hydrogen. If you don't, what? 500 Kelvin, yeah. Right on the next heading, isomerization reaction. Isomerization. Done? Janvi done? Now, isomerization reaction. Right on the substrate alkanes. Isomerization. Substrate alkanes, reagent, a Lewis acid in presence of concentrated strong acid, let's say AlCl3 with HCl, any Lewis acid in presence of HCl. Okay, so let's say alkane is straight chain alkane. Okay, let's say N-alkane है ना. When you are having a straight chain alkane, if you treat it with AlCl3 and HCl, the product is going to be branched alkane. The product is going to be a branched alkane. Keep in mind. So जैसे कि if I am having N-hexane, this N-hexane will be converted by using AlCl3 and HCl. It will be converted into isohexane. Got it? This is the reaction. That's why it is called isomerization. Huh? Yes. Huh? Yes. Isomerization. Got it? Isomerization. Similarly, isohexane अगर मैंने तुम्हें दिया हो तो, if I would have given you isohexane would have converted into neopentane. Neopentane. But again, if you ask me neopentane अगर मैंने दिया है, तो neopentane will not get any conversion because there is no hydrogen. So Lewis acid will not get added. There will be no reaction with neopentane. So all neo Will not react with AlCl3 and HCl. So basically it's a reaction which is converting straight chain to branch chain alkane. That's why it is called isomerization. And this thing is something, remember NCERT बोलती है, this reaction is of great industrial importance because it is used in cracking of gasoline. What is gasoline? gasoline, petrol. पोकीमॉन नहीं बोला, अच्छी बात है बेटा. गैसोलीन पेट्रोल का नाम है. बेसिकली पेट्रोल इंडिया में बोला जाता है. ओके, इन इंडिया वी कॉल इट एज पेट्रोल, इन एशियन कॉन्टिनेंट वी कॉल इट एज पेट्रोल, इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन पोर्टुगीज इट इज कॉल्ड गैसोलीन. ओके, कीप इन माइंड गैसोलीन इज अनदर नेम ऑफ पेट्रोल. सो मेकिंग ऑफ पेट्रोल इज अ प्ले ऑफ दिस रिएक्शन. अभी मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा इन द विद इन 10 or 15 मिनट्स, ऑक्टेन नंबर. आज के ज़माने में इफ़ यू हैव विजिटेड बैंगलोर एयरपोर्ट, इट इज़ रिटन ऑक्टेन नंबर. वी आर हैविंग हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर फ्यूल और पेट्रोल. व्हाट डज इट मीन? हायर द ऑक्टेन नंबर, मोर गुड इज द फ्यूल, मोर बेटर इट विल बर्न. ओके, सो दैट्स द रीज़न. आज के ज़माने में पहले शेल पेट्रोल आया था बैंगलोर में, राइट? नाउ अभी शेल वो कम हो गया. नाउ मोर गुड वन हैज़ कम, हाई ऑक्टेन नंबर वाला. एयरपोर्ट के पास तो लगा यार बोर्ड, पता नहीं कहाँ मिलता है, मुझे नहीं पता.
In airport, I've seen the banner. I also don't know where you get it. 140 रुपए सर शेल में सच में? Yeah. It gives you the feel, yeah, true. हाँ. Last one. Isohexane to neopentane. Neopentane, if it reacts, no reaction. Got it? बहुत पंचायत है तेरे को. बहुत अच्छा है सर काबिल फ्लाई मेरा एक स्टूडेंट है 2020 में, he used to say, सर पेट्रोल अच्छा नहीं है, डीजल अच्छा है, you get the feel in driving the car. I agree with that. अबे मैं क्या मानता हूँ ना, पेट्रोल की गलती नहीं है, चलाने वाले की होती है. जैसे मेरी बाइक और स्कूटी 60-80 के नीचे जाती नहीं है, मेरे पापा इतना डांटते हैं मेरे को, मर जाएगा एक दिन, एक्सीडेंट हो जाएगा. आई एम लाइक मैं बता रहा हूँ, मैं 8 किलोमीटर अवे रहता हूँ. आई स्टार्ट एट 11:15 फ्रॉम माई हाउस, आई रीच हियर बाई 11:30. 8 किलोमीटर्स अवे, आई ड्राइव दैट फास्ट. Very close, sir. 8 kilometer you took. 8. 8, then okay. I'll come the same. Yeah, so you also drive? Nice. Okay, right on the next reaction, aromatization reaction. Aromatization reaction. ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, हमारी पंचायत भी रिकॉर्ड हो रही है ना, वाणी में हम सुनेंगे सब. Aromatization reaction. सेम है यार, मीन्स जो हमने उस दिन पढ़ा था. एग्जैक्टली जो हमने उस दिन पढ़ा था, याद है? पॉलीमराइजेशन. अभी ये यहाँ पे भी है एरोमेटाइजेशन. सबस्ट्रेट सेम है, एल्केन्स विद 6 and more कार्बन. मिटा दूँ? शैल आई रब इट? शैल आई रब इट? Aromatization. Substrate alkane with 6 or more carbon. Reagent 773 to 780 Kelvin temperature, copper or iron tube. So it is called as copper or iron tube. Basically, hot copper or hot iron tube. That is the reagent. Okay, and we can use some oxides of, in presence of oxides of vanadium, molybdenum, chromium. Okay, what is this? vanadium catalyst. 773. That is catalyst. Yeah, supported over alumina. Supported over alumina. The product is going to be benzoate compounds. So this is the reaction that helps you in conversion of alkane to benzene. Hot copper or iron tube in presence of oxides of vanadium, molybdenum and chromium, which is supported over alumina. The presence. Okay, fine. Nothing. Just thinking something. So reaction goes like, alkane should be an alkane, okay? It should be an alkane. Straight chain alkane, okay? So straight chain alkane hai with CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Let's say we are having 7 carbon का one alkane. Okay? Once I am having 7 carbon का alkane, I am using a reagent like, one reagent like Al2O3 or Cr2O3 or what is it? V2O5. In presence of heat should be at 773 Kelvin at 60 to 70 atm pressure. Okay, so ये सब एक साथ मत यूज कर लेना है. I am like giving you कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. This way the question can come. Anyone can. Just don't get afraid कि क्या है ये. It is this reaction. Okay. Toluene, no? Toluene बन जाए. Correct है. Okay. It will make toluene. Got it? Similarly, अगर 6 कार्बन होता तो बेंजीन दे देता.
if it's 12 का